नमस्ते गाइस, मेरा नाम है ऋषभ देव। आज हम बात करने वाले हैं इसराइल ईरान वॉर एंड इट्स क्रिएटेड जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इजराइल्स पेजर अटैक एंड द वॉकी टॉकी अटैक एंड द डेथ ऑफ नसरुल्लाह। सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए तो हम आज बात करेंगे कि ईरान का रिटेलिएशनरी मेजर। दे दे स्ट्राइक्ड 180 मिसाइल ओवर द ऑल ओवर द इजराइल, स्पेशली ऑन द तेल अवीव। हमारे लिए तेल अवीव ही इसराइल की कैपिटल है क्योंकि वी आर द इंडियंस। So Iran targeted their Mossad head office, military locations, airport and other main government buildings. तो इस भयंकर अटैक में किसी भी इजरायली की मौत नहीं हुई है, बट वन पैलेस्टीनी गाय डाइड। ही वाज वेटिंग नियर द गाजा बॉर्डर फॉर एन सीज फायर। तो तभी मिसाइल उसके सिर पे गिरता है और वो मर जाता है, पर उस वक्त मिसाइल एक्सप्लोड नहीं होता। And how the entire population got protected by just from the 180 missile attack. So for that, Israel has created a doomsday bunkers. You can see the picture of that. This type of bunkers are located at the several places all over the Israel, and they can accommodate approximately 95 lakh to 1 crore entire population of the Israel. For this, they have created an application or an siren all over the place. That will give you a notification or siren बजना शुरू हो जाएंगे कि मिसाइल और कुछ एनिमी स्ट्राइक हो रहा है, प्लीज गो टू द सेफ लोकेशन। तो उसका बदला ले तो उसी अटैक का बदला लेने के लिए कि तो जो बाइडन हैज एंड द नेतन्याहू एंड अदर इजरायली ऑफिशियल्स हैज गिवन द स्टेटमेंट कि इसकी भरपाई बहुत करनी पड़ेगी ईरान को एंड ऑल दैट स्टफ, एंड दे विल अटैक। And there is a rumors or the news that coming out that they might attack the nuclear facility, or they are specifically considering the targeting the Iranian oil fields and the infrastructure. Whereas कि जबकि उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मिस्टर नफ्ताली बेनेट, उनका मानना है कि now it is a perfect time to attack the nuclear facility of the Iran, whereas USA does not want that because USA officials and Joe Biden specifically said that this is a red line and they don't want them to cross it, because USA does not want कि China or Russia directly involve हो जाए in the Iran-Israel war. But as we all know that Netanyahu does not listens to anyone, तो वो वही करेंगे जो उन्हें करना है. But let's see what happens the next. इसी को कंटिन्यू करते हुए ऑयल के प्राइस भी सडनली इंक्रीज हुए जब बाइडन ने स्टेटमेंट दी कि वी विल डिस्ट्रॉय द ऑयल फील्ड्स ऑफ एन ईरान. So उसी के बाद we have noticed that the price of an oil has been increased by 5%, and it is currently around the $73 to $74. But it is might the possible that it can rise up to the 77 or the $62, $77.62 or even more before the closing bell by today or by tomorrow, अगर ईरान इजराइल अटैक नहीं करता और यही स्पेकुलेशन कंटिन्यू रहता है. And there are also reports that I have read जो ये कहते हैं कि prices may go up to $100 and $120 if Israel attacks the Iran and उनकी complete oil infrastructure और सब कुछ destroy हो जाता है. तो उसी के रिस्पॉन्स में व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ये स्टेटमेंट दी है कि वी विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल विद आवर एलाइज, ताकि मार्केट में प्राइस स्टेबल रहे एंड देयर कैन नॉट बी अ मच इम्पैक्ट of the price on, so there is no sudden change in the price. Whereas we all know that OPEC and OPEC plus led by the Saudi Arabia does not listen to the Biden administration, but we hope कि अगर ऐसा कुछ अटैक वटैक होता है तो they listens to them and the prices can be in the control, and they can remove the ban from the Venezuela oil also, so it can be available in the open market. But let's see what happens over there. But अभी एक और एंगल इसमें आ रहा है कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का. If you remember him, he is the Raza Saab. He is a son of an Shah of an Iran. The Shah of Iran के हमेशा से अच्छे ties थे before the Islamic revolution happened in Iran. So he is preaching to his supporters and specifically Iranian public, and he is requesting Iran armed forces to join him against the revolution, against the Islamic regime, जो कि current president और सुप्रीम गार्ड के अगेंस्ट है.
कि ही स्टेइंग, वो उनके पब्लिक को या उनके लोगों को ये बता रहे कि ईरान के इजराइल और यूएस से खराब नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है फॉर द करंट सिचुएशन ऑफ द ईरान, it's all because of the Islamic regime and we have to join against the revolution. So this is the fifth generation warfare, और उसको इस चीज को इग्नोर नहीं किया सकता कि जैसे कि बांग्लादेश में ऑल ऑफ द सडन द regime ही चेंज हो गई. That can be also happened at the Iran as well, and the US led support or the US supportive government can comes out of the nowhere, because few days ago Israel's Prime Minister Netanyahu directly talked with an Iranian people, talking about was giving him a message that it is a time to change the Iran's regime to bring all the problem solution for an Iranian people. तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में देर इज अ हाई पॉसिबल चांस कि दिस इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ एन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, और ईरान इसमें बहुत पीछे रह चुका है. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट. इफ इसमें कोई अपडेट आता है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊंगा. तो अभी हम बात करेंगे कि ईरान से क्या रिस्पॉन्स आया. सो ही इज द करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ एन ईरान. ही सेड दैट के भाई आई एम हर्ट बाय द, उसे उन्हें उन्हें काफी दुख हो रहा है कि यूएसए और यूरोप ने उनको फॉल्स ट्रूथ दिए थे आफ्टर द पेजर एंड वॉकी टॉकी अटैक, कि भाई अब इजराइल इससे आगे कुछ नहीं करेगा, सो डोंट वरी, आप रिटेलिएट मत करना. फिर उसके बाद इजराइल ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी और नसरुल्लाह को मार दिया. सो नाउ इज सिंग आई एम डीपली शॉक्ड. उनकी स्टेटमेंट से और उनका जो इंटरव्यू मैंने देखा उससे हिसाब से ये लगता है कि डज नॉट हैव अ मच एक्सपीरियंस, he does not have a complete knowledge about the geopolitical situation and what's happening around him. क्योंकि भाई ये उनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये 5 महीने पहले ही आया. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ही इज करंटली डिसअपॉइंटेड इन डीप शॉक. तो देखते भाई अभी ये आगे क्या करता है. लेट्स होप ही एक्ट एज एन लीडर. और ज्यादातर और उन्होंने क्या किया है इन द जियोपॉलिटिकल इन द बैक चैनल में, ईरान जस्ट समन्ड द जर्मन एंड ऑस्ट्रियन एनवॉयस. उनको उनकी एम्बेसी लोगों को अपने देश में बुलाया और बोला कि भाई आपने ईरान के स्ट्राइक की निंदा क्यों की आपके गवर्नमेंट ने. बस वही स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बाकी कुछ मेजर उन्होंने बैकग्राउंड चैनल या उनके एक्सटर्नल अफेयर से मिलिट्री के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लिए. वेर एज इसराइल ने भाई उत्पात मचा के रखा है. आई जस्ट फील लाइक 1 करोड़ का देश है पर क्या उत्पात मचा के रखा है. बिकॉज ऑफ द इसराइल टुडे द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूएनएससी हैज बीन जीरो, और के ना के बराबर. They have broke all the possible bans, rules, and regulation they can break. So, for example, uh, Antonio Antonio Guterres, sorry for the mispronounce, उन्होंने ये statement दी थी after the 180 missiles attack of Iran over the Israel, कि भाई आई एम कंडेमिंग, उन्होंने कंडेम किया इसराइल और लार्ज स्केल वॉर ओवर द ईरान की जो ये फैल रहा है वॉर. वेर एज उनको वेर एज उनको ये स्टेटमेंट इसराइल की पसंद नहीं आई. तो इसराइल ने उनको बैन कर दिया कि ही हैज नॉट कंडेम्ड एनी वॉर ऑफ द अटैक्स ऑफ द October 7 ऑफ द इसराइल ऑन द इसराइल. तो इसी उनको ये स्टेटमेंट से पसंद नहीं है तो उन्होंने यूएन चीफ को बैन कर दिया. दिस इज आई थिंक दिस इज हैपेंड द फर्स्ट टाइम इन द एवर हिस्ट्री कि किसी ने यूएन चीफ को बैन कर दिया. What and apart from that, I would also like to add that, do you think that, I also want to ask a question, please guys, आप comment में बताना. Do you think that UN chief is currently partial, not over the Israel-Iran war, उनका matter है, but I'm just want to talk about over the specific conditions of the India as well. For example, जब भी कोई issues होता है for the Abrahamic religion, जो जिसमें आता है Christianity, Muslims and Jews, तो आपने उनका स्टेटमेंट्स और कुछ भी आया होगा, रिपोर्ट्स आई होगी. वेयर एज फॉर द नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स लाइक फॉर एग्जांपल सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा, तो उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आती. फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन इन द बांग्लादेश अगेंस्ट द माइनॉरिटी हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज,
तो उनकी कोई स्टेटमेंट स्पेसिफिकली नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आई है कि माइनॉरिटीज राइट शुड बी प्रोटेक्टेड, एक ट्वीट और एक न्यूज रिपोर्ट, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स आई नहीं है, ना ही कोई स्टेप्स लिए गए टू प्रिवेंट दैट. So I also want to know that opinion on that. Okay, do you think that UN chief is biased? Not in this. If you want to share that, please share it, but in other matters as well. So after that, Israel has just attacked yesterday only, has destroyed the Syrian base. From here, the जो वहाँ पे सीरिया में ईरान की प्रॉक्सी है, तो वहाँ पे ईरान was planning कि वो मिसाइल्स और अदर आइटम्स फॉर द अटैक कि वो वहीं से पास करेगा टू द लेबनान एंड गाजा. तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इसराइल ने मिलिट्री स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ द सीरिया, जहाँ पे ज़्यादातर रशियन स्टोरेज और रशियन वेपनरीज थे, उनको completely डिस्ट्रॉय कर दिया. So this can be a greater escalation because it is a very close to a Russian Navy base, Russian base in Syria. तो देखते हैं कि आगे क्या होता है. Just I want to show you the location. So Khamenei Air Base. So this is the Khamenei Air Base जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया. So उसके ही बिल्कुल बाजू में, and there is in the map there is almost a 200 to 300 meter distance between the Khamenei Air Base and the storage facility of the Syria, जहाँ ज़्यादातर रशियन वेपनरीज होती है फॉर सीरिया, और कभी कभार रशिया भी उसको यूज कर लेता था. तो उसी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है इसराइल ने विद द ड्रोन. तो लेट्स सी अभी रशिया का एज ऑफ सच रिस्पॉन्स ये आया है कि दिस इज एस्केलेशन ऑफ अ वॉर एंड वी विल रिटालिएट ना. उसके अलावा कोई मेजर कोई बड़ा इम्पैक्ट, कोई बड़े उन्होंने स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी है. बट लेट्स से अगर कोई मेजर स्टेटमेंट आती है, फिर कोई मेजर एक्शंस लेते हैं, तो I'll make an updated video on that. So guys, thank you and Jai Hind, Jai Bharat. Please like, share and subscribe my channel to be motivated and follow this to get the detailed information about such geopolitical news and other information. Thank you.